बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, सालाना इम्तहानात की तैयारी के सिलसिले में हिस्सा मारूजी के सवालात और टेस्ट का सिलसिला ऑन एयर जारी है और आज तीसरा टेस्ट हम ऑन एयर ले रहे हैं। आज का टेस्ट जो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के हाफ क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। स्टूडेंट, आपको बताता चलूँ कि आज का ये जो टेस्ट है इसमें टोटल 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपने ये करना है कि शीट के एक कोने पे अपना रोल नंबर लिख लें और शीट के दूसरे कोने पे आपने ऑब्टेन मार्क्स जो लिख लें और लेक्चर के एंड में आपने अपनी शीट की तस्वीर बना के, और शीट एक ही होनी चाहिए, दो शीटें ना हो, शीट की तस्वीर बना के आपने मुझे इनबॉक्स जो करनी है व्हाट्सएप जो ग्रुप के अंदर, और जो बाकी कॉलेजेस के लोग हैं वो कमेंट्स में अपने मार्क्स जो है वो लिख देंगे। तो स्टूडेंट, इसके अलावा अगर आपको तस्वीर ब्लर दिखाई दे रही है तो यूट्यूब में ऊपर जो 3 डॉट्स का निशान आता है वहां पे क्लिक करके क्वालिटी जो 360 या 480 पे रखें तो आपको टेस्ट जो क्लियर नजर आएगा। तो बढ़ते हैं आज के टेस्ट की तरफ। चैप्टर नंबर 4 के क्विज आपके सामने, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि चीजें आपको जो क्लियर नजर आए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। In relational database, the table is also called tuple, relation, file, or schema. In relational database, table is also called tuple, relation, file, or schema. Then आपने जो आंसर करना है वो है क्वेश्चन नंबर 3। In third normal form, a non-key attribute must be dependent on non-key attribute, key attribute, composite key, sort key. In third normal form, a non-key attribute must not be depend on. Then आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुज़श्ता टेस्ट में भी मैंने पूछा था। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन टू डिफरेंट टेबल्स हैविंग सेम नेम आर कॉल्ड synonym, homonym, acronym, mutual exclusiveness. Different attributes in two different tables have same name are called synonym, homonym, acronym, or mutual exclusiveness. Then question number 5. Every relation should have primary key, candidate key, secondary key या म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस। ठीक है जी। देन चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अगला क्वेश्चन जो आपने स्टूडेंट सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 7। A rule that states that each foreign key value must match a primary key value in the other relation is called. A rule that states each foreign key value must match a primary key value in the other relation is called referential integrity constraints, referential integrity constraints, key match rule, entity key group rule, एंटिटी की ग्रुप रूल, या आखिरी ऑप्शन है फॉरेन स्लैश प्राइमरी मैच रूल, फॉरेन स्लैश प्राइमरी मैच रूल। देन क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपने करना है, ये उसके उलट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। टू आर मोर एट्रीब्यूट्स विद डिफरेंट नेम्स बट सेम मीनिंग्स क्रिएट ए प्रॉब्लम। टू आर मोर एट्रीब्यूट्स विद डिफरेंट नेम्स बट सेम मीनिंग क्रिएट ए प्रॉब्लम। होमोनिम, एलाइसिस, सेनोनिम और अल्टरनेट एट्रीब्यूट, इन दोनों में से होमोनिम और सेनोनिम में से याद रखिएगा एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से जो मस्ट है। देन आपने आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 10 को। द एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो इन फंक्शनल डिपेंडेंसी इज कॉल्ड। ये कल भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंडिडेट की, डिटर्मिनेंट, फॉरेन की या के प्राइमरी। देन आपने आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 11। The goal of normalization, the goal of normalization is to, the goal of normalization is to get stable data structure, increase number of relation, increase redundancy or remove constraints. Then आपने आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 13 को। Which form of dependency is removed in second normal form? सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कौन सी डिपेंडेंसी जो है वो रिमूव
की जाती है? फंक्शनल, ट्रांजिटिव, एसोसिएटिव या पार्शियल? Then question number 15. A fundamental dependency between two or more non-key attributes is called partial functional dependency, partial non-key dependency, transitive dependency या none of these. ठीक है, सो ये था स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और इसमें आपने जो क्वेश्चन आंसर करना है वो आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 1, a database consists of various components is called tool, properties, entities, objects. A database consists of various components called tools, properties, entities, or object. Then question number 2, which of the following database object is used to retrieve data from database? Which of the following database object is used to retrieve data from database? Queries, forms, reports और tables. Then आपने आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 5 को। Microsoft Access saves the database with the extension .mdb, .msdb, .madb, .mxls। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आपने आ जाना है क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में which of the following is not a database object? Table, query, report, Microsoft Word. Which of the following is not a database object? Table, query, report, MS Word. Then going to next question, question number 11. Which object is used to store data and define structure for the data in a database? Table, macro, form, or query? Which object is used to store data and definition structure for the data in the database? Table, macro, form, or query? Then question number 13. Column of the table corresponding to table, record, field या cell. Column of the table corresponding to या corresponds to table, record, field or cell. Then question number 19. The smallest meaningful unit of the data in a database is. Very important question और पेपर में आने की भरपूर सलाहियत रखता है। The smallest meaningful unit of a data in a database is called byte, record, character or field. Then question number B is a collection of data that consists of name, address and email of a person is called. 1 or 2 times ये बोर्ड के पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। Collection of data that consists of name, address and email of a person is called byte, record, character or field. Then question number 22. It is very simple to create the database using. Which one is the simplest way to create the database? Query, wizard, common standard or easier program? Now we go to next chapter, which is the chapter number 6. And the question is question number 3. In a relational database, a single piece of information is called. In a relational database, a single piece of information is called table, record, entity, or attribute. Then question number 6. Which criteria can be used to find 4-character name that starts with character H? Which criteria can be used to find 4-character name sorry, that starts with H? H cross 4, H question mark 4, H triple question mark,
H triple H sign. Then question number 9. Which of the following view in MS Access is used to define the structure of the table? Data sheet view, QBE view, relationship view, design view. Then question number 18, which is on the next page. Which data type is default type? Memo, number, text, or auto number? Which data type is a default data type? Then question number 28. After 18, question number 28. Each of the following is an example of valid access data type except. Each of the following is an example of valid access data type except memo, currency, name, or text. Which one is invalid from these four ones? Now question number 31. Field properties are shown in. Field properties are shown in Microsoft Access. Design view, datasheet view, A and B, none. Then question number 35. Which field type can be indexed? Which field type can be indexed? Memo, number, hyperlink, overlay. Okay. Then question number 38. Which of the following is न्यू रिकॉर्ड बटन इन एमएस एक्सेस? इसमें से कौन सा बटन जो है वो न्यू रिकॉर्ड के लिए? इसमें आप ऑप्शन लिख लें। अगर आप समझते हैं डी ठीक है तो डी लिख लें, सी ठीक है तो सी लिख लें, बी ठीक है तो बी लिख लें और ए ठीक है तो ए लिख लें, क्योंकि ये निशान फिर जब मैं आंसर बताऊंगा दोस्तों तो आपको समझ नहीं आएगी, तो लिहाजा 38 नंबर का जवाब ए बी सी में लिख लें कि इसका आंसर कौन सा ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 44, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44. What is A to Z order called? What is A to Z order called? Ascending, descending, condescending और alphabetical. So स्टूडेंट ये 30 क्वेश्चन थे आज के टेस्ट में, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 जो है वो 50वें क्वेश्चन तक देखा। अभी ये कैरी ऑन है। कल का टेस्ट आप नोट कर लें क्वेश्चन। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 ये 3 चैप्टर होंगे। चैप्टर नंबर 5, 6 और 7। 5 और 7 दो छोटे छोटे चैप्टर है और आधा चैप्टर आज हो गया, आधा चैप्टर ये कल हो जाएगा। तो ये तीनों चैप्टर के अंदर से ये टेस्ट होगा जो कि मैं कल लूंगा। अब बढ़ते हैं आंसर्स की तरफ। मैं आंसर्स बोलता जाऊंगा, आप अपनी शीट के ऊपर उनको चेक कर लें। एक बार तो फिर याद करा दूं, शीट के एक कोने में अपना रोल नंबर और दूसरे कोने में आपने मार्क्स जो लिखने हैं बटा 30 करके। पहले का आंसर था रिलेशन, दूसरे का आंसर था नॉन की एट्रीब्यूट, तीसरे का ऑप्शन था होमोनिम, चौथे का ऑप्शन था प्राइमरी की, पांचवें का आंसर था रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, छठे का था सिनोनिम, सातवें का आंसर था डिटर्मिनेंट, आठवें का था गेट स्टेबल डेटाबेस, नौवें का था पार्शियल, 10वें का आंसर था ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज, 11 का ऑप्शन था डी, 11 ऑप्शन देखा थी डी। देन 12वें का जो है वो आंसर था ऑब्जेक्ट, 13वें का आंसर था क्यूरी, 14वें का ऑप्शन था डॉट एमडीबी, डॉट एमडीबी, 15वें का ऑप्शन था एमएस वर्ड, 16वें का आंसर था टेबल, 17वें का आंसर था फील्ड, 18वें का आंसर भी फील्ड था, 19वें का आंसर था रिकॉर्ड, 20वें का आंसर था विजिट, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर था 3, 22 नंबर का आंसर था एट्रीब्यूट, 23 का आंसर था एच ट्रिपल क्वेश्चन मार्क, एच लिख के आगे 3 दफा सवालिया निशान, 24 का आंसर था डिजाइन, 25 का आंसर था टेक्स्ट, 26 का आंसर था नेम, 27 का आंसर था डिजाइन व्यू, 28 का आंसर था नंबर, 29 का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, और 30 का आंसर था डिसेंडिंग।
क्या था जी, डिसेंडिंग। तो स्टूडेंट ये आपने अपनी आंसर शीट जो चेक जो कर ली है। अब आपने क्या करना है, मेक श्योर करें कि शीट के एक कोने में आपका रोल नंबर, दूसरे कोने में मार्क्स पे लिखे हुए हों। इसकी तस्वीर लें अपने मोबाइल से, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे आपने मार्क्स नहीं लिखने, सिर्फ ये तस्वीर जो है वो सेंड कर देनी है, और एक ही दफा सेंड करनी है, मल्टी टाइम जो सेंड नहीं किया करें, क्योंकि फिर वो बार बार जो चीजें रिपीट होती हैं। और शीट के ऊपर अपना रोल नंबर जो मस्ट जो लिखे। कल का टेस्ट मैंने स्टूडेंट आपको बता दिया है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, यो हमारा डेटाबेस का जो पहला हिस्सा है उसका मारूजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और देन हम बोर्ड के जो पुराने 5 साल के पेपर्स हैं उनमें देखेंगे कि इस हिस्से में से कौन कौन से मारूजी जो है वो पेपर में आ चुके हैं। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। ये मान लो।